मेन स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, ठीक है, और डिमांड से रिएक्ट कर रहा है, पर इंटरनल स्ट्रक्चर जो 4 आवर में है वो बियरिश है, और प्राइस उस 4 आवर के किसी सप्लाई जोन से या इम्बैलेंस से कंफर्मेशन दे रहा है, और नीचे लिक्विडिटी भी बनी हुई है अपनी सेल साइड। अगर वो लिक्विडिटी रीसेंट वाली है, फॉर एग्जांपल इट्स नियर, यू कैन टारगेट दैट। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेंड बुलिश होता है और आपका स्ट्रक्चर इन लोअर टाइम फ्रेम्स में बेरिश होता है, दीज आर काउंटर ट्रेड्स, सिंपल। और अगर जो मान लो बुलिश है और डिमांड से रिएक्ट कर रही है, पर लिक्विडिटी बनाते हुए रिएक्ट कर रही है, और दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। एंट्री शुड बी क्रिस्टल क्लियर। नहीं, एंट्री के बाद लिक्विडिटी बना रही है, एंट्री परफेक्ट एंट्री होगी 2 यूएस के बाद, व्हिच मींस यू हैव टू कीप योर ब्रेक इवन stop loss at your break even, because once the entry hits your zone, after that if it's creating the liquidity, which means problematic. Okay. All right, I will show you an example in silver. First of all, you have to start with the higher time frame. Good one is 4 hour. पहले हम इसमें अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। All right, let's begin. So this was our liquidity sweep. Yes, sir. What happened next? सर एक अपसाइड पुश का वेट करेंगे। 1 minute. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अपसाइड। First of all, you have to identify the market कि हुआ क्या है। यहाँ पे अगर हम देखें, this move, this move is done because of this liquidity sweep, right? Yes, sir. Yes, sir. Till this supply, and from this supply the market moved down, which means अच्छे से समझना, this pullback is covered by this liquidity sweep entry. Am I right? Yes, yes, sir. This, which means this whole structure is done by liquidity sweep entry. Now we have to figure out what's next. So let me first remove this. The current market behavior is like this. अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, ये अच्छे से समझना। Right? Right, sir. Right. तो इसमें से क्या आइडेंटिफाई हो रहा है? सर की सप्लाई से प्राइस पुश कर रहा है डाउन साइड, और रिसेंट स्विंग लो तक जाएगा वो। ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें,
from this supply the move came. Yes, और उसने वहाँ पर confirmation भी दिया हुआ है entry supply में. अच्छे से समझना, यहाँ पे liquidity थी, right? Yes, sir. Which got swept here. Which means our first liquidity is cleared. We have second liquidity here. अच्छे से समझना सब. And below it we have our demand zone. इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. सिंपल वे में समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना. Before this liquidity, we have imbalances here, right? Right, sir. If we check from this supply, our first target is done. Second target is pending, and below it there's a demand zone. But we have imbalances in middle, which means in this scenario, if we got confirmations here, we can target the next move if confirmations are there. अब यहाँ देखना, this would be the entry. Yes, sir. If entry is taken from the supply. आपके क्वेश्चंस का भी एक आंसर निकल जाएगा. Right? This selling scenario is only possible अगर यहाँ पे confirmations हमें नहीं मिले. Yes, sir. और अगर यहाँ पे confirmations मिलते हैं, which means this sell side liquidity will be pending, and once the trend start to bearish, उसके बाद ये वाला clear होगा, this one. समझ आया? Yes, sir. इसमें किसी को कोई confusion? Yes. Most of the chances नीचे जाने के ही ना, क्योंकि उस zone के नीचे liquidity पड़ी. बिल्कुल, but still we can't ignore this imbalance. वो भी in 4-hour time frame. If the time frame would be like 15 minute, 30 minute, chances would be कि ये वाला clear होगा, and from this demand zone the next push will arise. But the time frame here is 4 hour, right? तो ये चीजें दिमाग में रखनी है बस. These things are like very much small, but these things are necessary. That means अगर confirmation मिलेगी तो trade cut कर देंगे, otherwise hold करेंगे. That's it. सबसे पहले अगर 4 hour में आप trade ले रहे हो, this should be your final TP because the time frame is 4 hour. Yes, sir. जो वो वाले liquidities होते हैं, like first liquidity, second liquidity, third liquidity, वो ज़्यादा possible होता है target करना in lower time frame. Lower time frames. Great, that's it. Let's move now to 1 hour.
This lag I hate the most. All right. In 1 hour, we will mark this imbalance properly. अच्छे से देखना. If there would be no wick, we would mark like this. But this zone is already covered like this. So overall pending हमारा ये area है from this. But the time frame is 1 hour or it could be 4 hours. So you can better is to take the whole zone. Confirmations के बाद ही सब मैटर करता है. Let me first remove this. The imbalance is marked, right? Wait. Yes, sir. बोलते ही गायब हो गया, पता नहीं किसकी नजर लग गई. सर साकिब की लगी. और किसकी लगेगी? यही तो है यहाँ पे. साकिब, can you hear me? शायद ज्वाइन नहीं किया. नहीं, इसको मैंने देखा था इन मीटिंग. सर दावत में गया. नहीं है वो. ये यही काला जादू कर रहा है, इसलिए हो रहा है ये. यस सर, बोलिए सर. क्या कर रहे हो साकिब? सर आप भाई का वॉल्यूम है सर वहाँ पे. क्या भाई का वॉल्यूम? वॉल्यूम है भाई. मुझे समझ नहीं आया. फिलहाल लेट्स कंटिन्यू, बाद में देखते हैं. रिसेप्शन में सर हो. एट वेटिंग सर. Okay, great. Enjoy. Let's check. अच्छे से यहाँ पे समझना सब. We got our push. Let's now move in 13 minutes. 30 minutes is best for your entry. All right, what's next? Look for the breakout structure. मेरे को एक डाउट था. Yes. अगर डिमांड से रिएक्शन आता है, मतलब डिमांड पे टैप होकर रिएक्शन आता है, मगर जो टारगेट होता है वो टारगेट को बगैर हिट करे हाफ वे में ही नीचे आ जाता है और डिमांड को डिसरिस्पेक्ट कर देता है. तो उस जोन पे हम सेल कैसे करेंगे? First of all, it depends on the criteria. Let's say, for example, we can see target, right? Okay. But if something happened like this is what you mean? No. Then? It should not even hit the first target.
It didn't hit. The first target is here. Oh, okay. So is this something similar with you? Yeah, sometimes, not most of the times. Just wanted to know how to trade on this situation as well. In this situation, if something happened like this, which means something error is in your markings of your demand zone or supply zone. It's the simple reason. Okay. Clear? So I Yeah. recommend you to check out those entries which happened something like this. Maybe you will get your answer. Okay? No problem. Okay, great. So how can we identify our break of structures? Can you see any? Yeah, there is. स्ट्रक्चर ब्रेक सर एक डाउन साइड का दिख रहा है This? Yes sir. Yes sir. What's next? Sir, इसमें भी structure to the outside. Outside break of structure. Outside structure. Yes sir. Correct? Yes. डिमांड जोन को क्लियर करने के लिए अपन 1 घंटे पे शिफ्ट कर सकते हैं. Great. सर वैसे डिमांड जोन में फेयर वैल्यू गैप का होना लाजमी है या फेयर वैल्यू गैप के बगैर भी डिमांड जोन कंसीडर किया जा सकता है? Confirmations is all the game. Imbalance or demand zones, these are the bouncing levels जहाँ से chances है कि market will reverse or give the next push. Main thing is confirmation. We have our confirmations here. Yes. मैंने एक चीज नोटिस किया था, which is like the demand which suits the old liquidity and then goes up. That demand plays out more well. Exactly. Main thing is like your first entry is your next target, not next target. ये हमने already previous classes में बहुत बार discuss किया है कि for example this is your entry, next time it can be your target. That's how it works. Alright, so we have our confirmations here. What's next? Sir, एक fresh zone बना दो. We mark the demands and imbalance. Okay, so where is the first demand? You can see. Sir, bottom पे first demand. The first demand is the one which closed above the box After break of structure. Great. So we can see this is our first demand. Yes sir. Can you see any another demand? Downside. Last street demand. Is this correct? सर पूरा ले लो. Extreme demand sir. पूरा कवर कर लो इसको. Great. क्यों? ऐसा क्यों करना पड़ा? मैस है सर. मैस? सर मैं नीचे आता है मार्केट नीचे आता है. ये मैस किसने जो ये कहा? बनी हुई इसके अंदर डिमांड जोन के अंदर इसको लेने आता है मार्केट. ग्रेट. इसका बस एक छोटा सा फंडा है, ये देखो. I will show you by this and this. Okay.
Yes. Great. The final step is setting the target. Right? Right, sir. Done. Sir, liquidity is finished publishing. It's not. Sometimes this thing is the problem. This. Because it's creating liquidity. And the closer one is here. Almost. So in these cases, always set break even at your entry level. Okay? Okay, sir. इतना टाइम नहीं है हमारे पास. Done? Yes, sir, done. सर इसमें दूसरा भी यूज कहाँ हुआ एक्सटर्नल कंफर्मेशन में? First one here, second one here. Okay. तो कंटिन्यूएशन मान सकते हैं उसको? Obviously. ठीक. अब यहाँ देखो. This was your first target, right? Yes, sir. And this was the supply area from where the move came. मतलब कि यहाँ पे एक entry थी, right? Yes, sir. Yes, sir. ये अपनी liquidity बन जाएगी. बन जाएगी नहीं, बन चुकी है. बन गई. This. So you can target here easily this side because the trend is bullish. Yes, sir. Like this. Right? Right, sir. Yes, sir. This was our move. While these moves, you can go in 15 minutes to check something. अभी दिखाता हूँ. सर ऐसे में ब्रेक इवन पे एसएल सेट करेंगे तो अपन तो बाहर हो जाएंगे ना ट्रेड में से. It's not all the time. This situation is only possible sometimes. This one.
आपको तभी ब्रेक इवन पे ऐसे लगाना है if the situation is like this, because it can take your SL out, right? Yes, sir. So for this situation, the break even is possible. Most of the time, these entries are like target and this entry hit and target. That's it. यहाँ पे अभी फिलहाल फोकस करो. Okay, sir. Can you find anything here? Liquidity pool. Sweep of liquidity, and then again market structure shift, and then again to the higher target. Great. यहाँ पे अच्छे से समझो. First of all, this mess happened, right? Yes, sir. Yes, sir. Here, if we can see, we have our demand zone. निखिल भाई सांस मत लो. मतलब माइक बंद करके सांस लो. कुछ आइडेंटिफाई हो रहा है? Buy side liquidity. If we can see, हमें यहाँ पे confirmations मिली है. कुछ समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. So here is your second entry, if you wanna take, not necessary. For these entries, you have to wait for pullbacks, retracement. Okay, now let's check this structure. Can you find any entry? सर मैस काफी ज्यादा. Which means no entry, right? Yes, sir. Yes, sir. Check this thing. एक और चीज देखो अच्छे से. Continuous wicks, right? Right, sir. So this simply means the area is not good for entry. Yes, sir. This is our another pullback, right? Yes, sir. Yes, sir. If we can check here, Break of structure. we got the confirmations, but Yes, sir. again we have liquidity.
which means in your beginning phase you have to avoid this entry, right? Yes sir. आगे जाके फिर आग दोगे, बस स्टार्टिंग अच्छी हो। लेट्स मूव इन 4 आवर। सर एक ये कहना था कि वो बता दें कि किस टाइम फ्रेम से शुरू होना है, डेली से शुरू होना है या 4 आवर से शुरू होना है टॉप डाउन एनालिसिस के लिए? डेली से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन डेली और 4 आवर इज लाइक सेम, स्ट्रक्चर हमें समझ आ जाता है। राइट सर। खास फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि मेन चीज़ है हमें ट्रेंड देखना होता है हाई टाइम फ्रेम में, उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का देखना होता है। सो 4 आवर इज गुड। That's it. That's how we analyze. Which means from this side we got our move, right? Yes sir. And Yes sir. this sell side liquidity kept remaining pending. Yes sir. And this demand zone, maybe it will work for future, right? Right sir. तो Yes sir. जो आप टारगेट्स का कह रहे थे वो क्लियर हुआ? Yes sir. Any doubts? No sir. That's how we analyze. इतना ही करना है। सर एक क्वेश्चन है, हम्म कभी कभी होता क्या कंप्लीट लिक्विडिटी प्राइस लेता नहीं है, उससे पहले ही मतलब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देके डाउन साइड चले आता, तो उसमें सेल एंट्री प्लान कर सकते हैं? मैं समझा नहीं, आप फिर जैसे से रिपीट करो। लिक्विडिटी कंप्लीट स्वीप नहीं हुई, ओके, उससे पहले प्राइस ने कंफर्मेशन दे दिया सेल साइड की, अगर बाय साइड की टारगेट कर रहे हैं। बेटर इज टू नॉट टेक दैट एंट्री अगर आप बिगनिंग फेज में हो अपने। नो सर, बिगिनिंग पे नहीं। अगर आप बिगनिंग पे नहीं हो तो अगर कंफर्मेशंस मिल रही है यू कैन टेक एंट्री। ये बस बिगनिंग फेज के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग अगर अच्छी रही हर साइड से तो वो प्लस पॉइंट है। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, जो साइकोलॉजी के टॉपिक्स लिखवाए आपने इतने सारे, तो उनको ऑब्जर्व कैसे करना है? मतलब याद तो रटना तो है नहीं, तो बिल्कुल, कैसे क्या दिमाग में बिठाना है सर? आपको चीजें रियलाइज करनी है। जो मिस्टेक्स उसमें बता रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स उसमें बता रहे हैं, प्रॉब्लम्स एक हिसाब से आपको एनालाइज करनी है। जो प्रॉब्लम्स हो चुकी है बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ, वो आपको ऑलरेडी पता चल रही है, तो उस चीज को उसी वे में समझना है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रोड, यू ऑलरेडी नो कि कुछ कदम चल के ही आगे गड्ढा है, सो डेफिनेटली यू विल अवॉइड दैट विदाउट इवन रियलाइजिंग। खुद आप गड्ढे में नहीं जाओगे बिकॉज आपको पहले ही पता है वहां पे गड्ढा है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। सर वो इतना सारा लिखवा दिए हैं कि वो बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आंसर है याद करना, एग्जाम देना। ठीक, तो ऐसी बात है, वो कहो ना। इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ इतनी सारी चीजों में। आप एक काम कर सकते हो, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, मे बी क्लियर हो जाए सब। ओके सर। हम एक काम करेंगे, कुछ दिन बाद हम एक कंफ्यूजन क्लास करेंगे, ठीक है? उसमें जिसका जो भी कंफ्यूजन होगा रिगार्डिंग साइकोलॉजी एनीथिंग, हम उसमें वो क्लियर कर देंगे। ओके सर। ओके, you don't have to worry for anything. Hey bro, can I ask a question? Yes. If we check there's a supply there, right? But it's failed. As per your condition, there was 2 break of future also. Right. Also liquidity down there, and also demand
till demand we can target, but the supply failed. Can you please tell the reason? Where it failed? A little bit upside, bro. There is supply. You mean upside from this area? Demand, bro. Supply. Are you talking about this? No. Little bit down. This. हाँ. ये तो लेकिन हमने सप्लाई मार्क ही नहीं हमने यहाँ पे किया था. We targeted this high. लेकिन वो सप्लाई भी एक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि कंफर्मेशन मिलने के बाद वहाँ पे 2 ब्रेक ऑफिसर मिला ना. Let me check. Let's check in 1 hour, because in 30 minutes we can clearly see its liquidity. 1 net. You mean this? Yes. And you're talking the confirmations, this one. Well, actually there is no confirmation, bro. You don't know. Right? Yes. Only upside break officer. But as per our analysis, when we moved from higher time frame to lower, we set our target this. Even in 1 hour, if we can see. Overall, it's liquidity, right? So better to not take this supply. Overall, you are looking for a buy trade and you already have your targets. So better to avoid these areas. Okay. Like this supply, or maybe something demand will happen same like this. Better is to focus on your entry and target, that's it. मेरी एक ऑब्जर्वेशन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सर उसमें ये है कि अब देखिए ये जो ट्रेडिंग है इसमें हमें इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट पे जाने होते हैं. अब जो रीसेंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है उसके बाद पुल बैक फौरन आया. अगर हम इस सप्लाई को देखें तो इस सप्लाई में फौरन पुल बैक आता तो हम कहते हैं कि ये वैलिड है. अब ये इतने टाइम बाद सप्लाई आ रही है और क्योंकि ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर भी बुलिश है तो दिस सप्लाई इज प्रोन टू बी फेल्ड एंड नॉट टू बी executed. Main thing, first of all, what you check trend, right? Yes, which is bullish on 4 hour. After that you will plan, either you have to take another buys or you can continue your selling. Yes sir, क्योंकि सर जब सप्लाई एंड डिमांड जोन बनता है तो मैंने ये देखा कि मैक्सिमम मार्केट 1 से 2 दिन लेती है उस जोन में आने के लिए, अगर उस जोन में काम करना है. वरना मार्केट हफ्ते बाद आती तो दैट जोन डज नॉट वर्क. और अगर आती भी है 4 आवर डेली में आती तो फिर हमें लाजमी कंफर्मेशन मिलेगी उसमें दोबारा. सबसे बड़ा कंफर्मेशन इज दिस instant push. This is the most, मतलब ये powerful confirmation है अगर यहाँ से push आता है. Or something if happened like this, like for example the demand is tapered, after that this happened.
mess. This is the problem. Yes, sir. And this one gives the powerful confirmation, right? Yes, sir. ये हर confirmation मिलता है. बिल्कुल. This one is necessary. If you have something like this, आंख बंद करके ले लो एंट्री. ओके. सर आंख बंद करके बाय किया सेल दब गया तो नहीं लगेगा. कैसे लगेगा? अब अगर लग जाए तो लग गया. क्या कर सकते हैं? आपकी गलती. आंख क्यों बंद किया? आंख बंद करके कौन ट्रेड करता है? That's it. जर्ज सर ने बोला तो करना पड़ेगा. अच्छा, आप बात कर रहे हो साइड से जर्ज सर के साथ. लगता है चैटिंग हो रही है. सर जर्ज सर मुझसे बात कर रहे हैं. अच्छी बात है. उनको हेलो कर दो मेरी तरफ से. सर मेरा रुका आपके आसपास. फिलहाल हो गया ये चीज डन. Any doubts? All No, sir. clear? Yes, sir. All right. That's it. It was your all class today. Tomorrow is Sunday. So maybe the class will be Monday, or we will see if something will be there tomorrow. तो कल डिस्कस करते हैं. Okay? Yes, sir. Okay, till then take care. Thank you so much, sir. Okay. God bless you all.